Good evening, students. Today is the day one of 5 days hands-on machine learning, and I am Swarup Gorai, your ML trainer. Okay, so first let me introduce myself. My name is Swarup Gorai, and I am working on this field of AI for the last 5 years, and I'm still working on the latest trends of AI. So I am here to share my experiences, the problems I faced while working with different projects, what I have learned over these years, and how I overcome those problems while working in AI projects. So this is my aim. Okay. So you all must stay tuned and gain as much knowledge as possible in these 5 days. But these 5 days training, I'm telling you, this 5 days training won't help you in getting a very good job. I'm telling you for that because in these 5 days we'll be discussing about the basics. We will be discussing about the AI, we will be discussing ML, we will be discussing data science. What is the difference between all this? What are the Python libraries, how Python libraries are used, what is NumPy, pandas, these are all libraries, matplotlib, this is for data visualization. Because in data visualization, what we do, when you visualize something na, we understand better. Okay. Instead of writing, if you visualize it ना, that is much yeah, that gives us much more information. एक लगभग एक approx idea हो जाते हैं. That means this would happen. Just suppose if I am going from Mumbai to Delhi, okay, and if I know that the train is not now I want to visualize. That means is the train always coming at the correct time, and it is reaching to the destination at the correct time or not? If you visualize it through a graph now, suppose for 6 months I am visualizing the trend, that how the how this trend goes. It comes in the correct time, it reaches the destination at the correct time or not. If we visualize it, we understand that we should board this train or not. Okay, if I have a meeting in Delhi, and if it is not online, it is offline, and if I have to go through the train, so I can visualize it. In future हम क्या करेंगे, visualize ही तो करते हैं. विजुअलाइज करके हम पता कर लेंगे, फिर एनालाइज कर लेंगे जे आई वुड रीच द मीटिंग ऑन द करेक्ट टाइम और नॉट. ओके, तो ऑल दीज थिंग्स we are going to visualization is the thing. And then visualization के बाद what we will do, हमारे पास जो डेटा आएंगे, whatever data we will get ना, तो हम क्या करेंगे, पहले उस डेटा को पहले लेके माइनिंग. डेटा माइनिंग एक कॉन्सेप्ट टर्म है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, आई मे नॉट हैव हर्ड. डेटा माइनिंग मतलब क्या होता है? डेटा पड़े हुए, डेटा इज एवरीवेयर. We have to extract the data that is meaningful to our project. Okay, so that is data mining. Okay, but nowadays we can get data from Kaggle also. Kaggle is online. Every company is uploading the data over there. You can take that data and you can work on that, and you can get the insights of the problem, and you can give some knowledge, or you can get some software or some AI software to solve that problem. All these things you can do. So data is not a very big thing. Data you can get it from Kaggle, but real life data, na, data is very data is not good. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उस डेटा में कहीं कॉमा मिसिंग है, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है, कहीं पे डेटा में सपोज सोच लो न्यूमेरिक की जगह अल्फाबेट्स है, कहीं अल्फाबेट्स की जगह न्यूमेरिक, कहीं पे ब्लैंक स्पेस है. ऑल दिस ये सारे जो है डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं. डेटा को पहले हम क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं. मॉडलिंग करने के पहले डेटा को प्री प्रोसेसिंग, डेटा को हम तैयार करते हैं. डेटा जब तक तैयार नहीं होगा, यू कैन नॉट पुट इट ऑन ए मॉडल. ओके, तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग. Okay, we are not going to discuss about the image classification, we are not going to discuss about video captioning. Yeah, okay, we are not going to discuss about time series. So lot of things are there to discuss. Okay, lot of things are there to do practical. So that is not possible in these 5 days. Okay, in these 5 days we will cover all the basic concepts. And what you have to do in the after these 5 days, you shouldn't stop. Okay, you have to practice day and night. You have to practice every day. तो ये यहाँ से क्या होगा, ये इससे क्या होगा, you will gain more and more knowledge. आपको इंटरनेट पे you may not be fluent in Python. जरूरत नहीं है. यदि आप इफ यू पीपल आर नॉट फ्लुएंट, इफ यू डू नॉट नो पाइथन, तो पाइथन के लिए तो आपके मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हुए हैं, दैट यू कैन गेट इट. ओके, वहां से पाइथन आप सीख लो पहले. ठीक है, लेकिन यू शुडंट बी, आप यदि मास्टर नहीं हो रहे पाइथन, इफ यू आर नॉट ए मास्टर ऑफ पाइथन, यू कैन नॉट बी, नॉट ए प्रॉब्लम.
all the codes you will find it, it's open, it's everywhere. Okay, आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोड आपको चाहिए उसको आप गूगल में लिख दीजिए या आप चैट जीपीटी में लिख दीजिए, एंड राइट इट ओवर देयर एंड यू विल गेट दैट कोड एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दैट कोड. ओके, तो यू शुड नॉट, you if you are not a master in python or some, okay, तो not a problem, it's not a very big thing. Okay, कोड आपके दिमाग में होना, बट यू शुड नो व्हाट कोड टू यूज, हाउ टू यूज, ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नॉट टू बी अ मास्टर, मास्टर होने की जरूरत नहीं है, नॉट नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. तो ऑल दिस थिंग्स, ये कोड्स वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, नॉट ए वेरी बिग, नॉट इन डीप, आई एम टेलिंग यू. तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, अब हम डेटा विजुअलाइज करेंगे. उसके बाद हम डेटा में एक होते हैं, अ, क्या हाँ, डेटा विजुअलाइज करेंगे. उसके बाद डेटा हम मॉडल्स डिसाइड करेंगे, कौन सा मॉडल, फिर सुपरवाइज्ड के लिए अलग मॉडल है, अनसुपरवाइज्ड के लिए अलग मॉडल है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. तो you must stay tuned and gain as much knowledge as possible in these 5 days. Okay, now let me tell what I am doing in IGNU, who I am. Okay, I am working in IGNU as an academic counselor for 11 years, for the last 11 years, and due to the request of all your seniors and super seniors, we are having a YouTube channel which offers online classes free of cost. Because of your senior super seniors, they were repeatedly saying, "Sir, please YouTube में आप डाल दीजिए, we can study from there." Because IGNU में क्या होता है? Because you all are IGNU candidate. That's why I'm talking about IGNU, discussing about IGNU also. IGNU में what happens? There is a counseling session. Counseling मतलब क्या होता है? आप पढ़ के आइए और आप मुझे क्वेश्चन, यू आस्क मी क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू क्लियर योर डाउट एंड यू गो होम. लेकिन व्हाट हैपेंस, आप लोग को समझ में आता ही नहीं है. समझ में इसलिए नहीं आता जब थोड़ा सा आपको क्लासरूम सेशन भी चाहिए. बिकॉज 12th तक आप लोग क्या क्या क्लासरूम सेशंस किए, यू हैव स्टडीड प्रॉपर क्लासेस हुए, और काउंसलिंग सेशन यू आर नॉट इन अ हैबिट. तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर गिविंग ऑनलाइन क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस. वहां से पूरा क्लासेस ले लो, डाउट्स होंगे तो काउंसलिंग सेशन में पूछ लो, डाउट्स होगा तो यू कैन मेल मी ऑल्सो. ठीक है, तो वी आर ए टीम. Okay, you can mail us also, not a problem, and everything is free of cost. And if you go with the lectures properly, no one can stop you from scoring good marks. This is the aim of our YouTube channel. Okay, so that's why we are covering students from all over India. We want that everybody should get benefited from this channel. दैट इज ऑल, एवरीबडी शुड गेट बेनिफिटेड. एंड क्या होते हैं, 5 साल या होते हैं, 5 साल बाद क्या होता है, बीसीए का 10 ईयर होते हैं. 3 इयर्स में द कोर्स इज फॉर 3 इयर्स, एंड इफ एनीबडी कैन नॉट क्लियर तो 5 इयर्स हो जाते हैं वो. लेकिन आई वांट दैट एवरीबडी शुड क्लियर इन 3 इयर्स ओनली. दैट्स द एम. ओके, पीपल, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप भी कर देते हैं. ये बीसीए इज वेरी टफ, आई वी कैन नॉट डू, लेट्स ड्रॉप इट. तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए वी हैव दिस चैनल ओवर हियर. ओके, so you all should be thankful to your seniors. But before starting the training, let me explain the aim of this 5 days hands-on machine learning. Okay, first and the foremost, it is a job-oriented program. But these 5 days won't fetch you a very good job or fetch you a job, you can say. We will have a 15 days program also. 15 days, that will be level 2, and that will be in the month of August, when you will then you when you will all we have completed all your semester papers, practicals. June and June May you have your semester papers, and July you will all will have the practical papers, and in the August you will be free. So August ke 11th we are planning that we will have a 15 days program, and that would be means full on means dhamal program, you can say. Full of a lot of things we will be discussing over there, I'm telling you. Okay, so you should join that program also. Okay, and in this okay, now let me come to the 5 days. Okay, so what we have, how it is a job oriented program, you might be asking, how is it, huh? So what we are doing, we are not limited to only teaching IGNU students. We are broadening our feathers, our aims, and we are collaborating with startups as well as few firms that are working on AI. Because I am myself a data scientist, so I am interested. I want that everybody should know AI and should join the AI firms. And because if you do not know AI, if you do not understand AI, na, so you will be the slave of AI, I'm telling you. So you should understand and you should know how to design, how to deal with AI. That's the thing. So if you take the training seriously and learn the concept properly and score more than 80% in a test, you might get a call.
You might get a call from these firms with whom we have collaborated. That's why we are asking that you should get a certificate, because what happens with the certificate, it is a proof that you have done the training from our YouTube channel, because we are collaborating. They know us. Okay, that's what you're saying. But if you say that means no, we do not want a job now, we want to gain knowledge, that's not a problem. Then you should gain knowledge. उसके बाद level 2 आएंगे, but you should appear for the test also, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द टेस्ट में होता क्या है, टेस्ट में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि दीज क्वेश्चंस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एनी क्वेश्चंस, ठीक है, दीज आर फ्रॉम द स्टार्टअप कंपनीज ओनली, वी आर आस्किंग देम दैट प्लीज make few questions for our students tests. Okay, and they prepare the test, and we put it in front of you, and you take the test, and you will understand that how much you have gained knowledge, and how much you have to put pressure on you, how much you have to work on yourself to get a version or a better version of yourself on AI. Okay, so test will demonstrate that what you have learned. So please take these 5 days very seriously. In the batch one, many of the candidates didn't take seriously, and they have appeared for the test, and they did horrible. They have scored zero also, I'm telling you. And many of the students from batch one is over here also. Okay, और एक और फायदा होता है इस जो 5 days hands on machine learning. There is one more thing. The thing is that after 5 days, now after you when you are doing BCA or MCA or PGDS or MSCIS, there is a project also. There is a project in BCA also, in MCA also. So from project, no, you do not have to buy project from anywhere else. Okay, if you go through these 5 days or the next 15 days, then you will make a project on your own, and you will score a lot of marks, because the project the marks of project is 300 marks. Okay, and if you school management system, hospital में इस तरह का प्रोजेक्ट दोगे तो 300 में कितने मिलते हैं? अब 113 मिलते हैं, 120 मिलते हैं. तो क्या होता है, आपका जो परसेंटेज BCA automatically goes down. तो इससे क्या होगा, if you learn all these things, तो you will make a project on your own. तो you will score good marks, because if you make it on your own ना, तो you can answer each and every question I'm telling you. You do not have to buy from the market. क्यों? Because this project mafia, ये भी एक माफिया है, जो प्रोजेक्ट बेचते हैं और आप लोग का करियर को बर्बाद करते हैं. दे डिस्ट्रॉय योर करियर. They destroy your career through these assignments also. You people buy assignments, and you simply put a first page in front of it, and you just upload it on the upload it in LMS software, or the link provided, and we get it, and we see that the handwriting is same, and we give zero. I'm telling. So do not encourage all these things also. Okay. So, but do remember there is a test after in the fifth day, and that will be a mind-boggling test. Okay, many of you may have experienced it, who are from batch one of 5 days hands-on machine learning. Okay, now let's start the trading. Now, what is artificial intelligence? We'll discuss about it. Okay, what is artificial intelligence? Anybody? What is artificial intelligence? It is the intelligence of the machine. Simple. Artificial. ये real नहीं है. This is the intelligence of the machines जो हम create करते हैं. Which intelligence कैसे बढ़ते हैं? How intelligence increases with practice. तो हम क्या, we forward data to the machine, and they learn from the data, and automatically they gain experience, and with experience they become intelligent. That is artificial intelligence. जैसे there is a small kid. Okay, so when he becomes a big one, so he's gaining knowledge, he's gaining experience, and with experience he's getting intelligent also. He doesn't get fooled. First एक बच्चा होता है वो he gets fooled, ठीक है, and then उसको जब when he starts gaining, तो automatically he gains intelligence also. In the same way, वो जो automatically gains intelligence, मतलब क्या हो रहा है, उस बच्चे को, एक kid, उसको क्या हो रहा है, उसके पास डेटा आ रहे हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट. ओके, फ्रॉम द एनवायरमेंट ही इज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. डेटा इज कमिंग. डेटा मतलब क्या, जैसे साइक समबडी इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो उसने सीख लिया बाइसाइकिल ऐसे करके चलाते हैं. वो दैट इज अ टेलीविजन, दैट इज सन, दैट इज मून, दिस इज हाउ टू बिहेव. तो ये सारे चीज, दिस आर ऑल डेटा एक्चुअली. डेटा, ठीक है. तो इस तरह का हम क्या करते हैं, मशीन को हम, मशीन और रोबोट को हम डेटा, वी फीड डेटा, and from the data they learn a lot of things, and automatically they get intelligent. Okay, so that is artificial intelligence, simple तरीके से. ठीक है. यदि किसी ऐसे नॉर्मल बच्चे को, बंदे को आप पूछो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है,
तो वो बोलेंगे जो एक टर्मिनेटर मूवी आया था 1980s में, उसमें दे अंडरस्टैंड एंड दे गेन कॉन्शियसनेस एंड स्टार्टेड किलिंग ह्यूमंस एंड स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और होता क्या है? ठीक है। तो दैट इज आर्टिफिशियल, लेकिन देयर इज ए पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल ऐसे नहीं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और हमने ऐसे ही कर रहे, इट्स नॉट, देयर इज अ पर्पस। पर्पस क्या है? वट एवर वी आर वर्क वी आर डूइंग ना, टफ वर्क, सिंपल, तो वी वांट इट सिंपलर। हमें हमें सिंपल चाहिए, सिंपल वे में इजीली विद इन सेकेंड्स द वर्क शुड बी डन। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे एग्जांपल ले लो, आप लोग यू वांट टू लिसन टू सॉन्ग्स, ओके, तो सीरी हो और भी बहुत सारे आजकल आ गए, एलेक्सा, आई वांट टू हियर सॉन्ग्स ऑन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बस कौन सी सॉन्ग, यू टेल द नेम ऑफ द सॉन्ग और ऑटोमेटिकली इट कम्स। नहीं तो पहले क्या होता था, आपको उस सॉन्ग्स को ढूंढना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था, यू हैव टू सर्च द सॉन्ग्स एंड देन it will start, the song will start, okay। लेकिन अब क्या हो रहा है? Means you just speak out, they grab the knowledge, they grab it through natural language processing। वो क्या होते हैं? उसे वो डेटा को लेते हैं हमारे, दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, और उसके बाद दे प्रोसेस इट एंड दे स्टार्ट गिविंग द आउटपुट। ओके, तो क्या हो गया इसमें? हमें यूज इजी हो गया एंड द आउटपुट इज ऑल्सो वेरी गुड। ये नहीं, क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, सॉन्ग की क्वालिटी काफी अच्छे होते हैं। ठीक है। तो हमारे क्या होता है, हमारा जो लेबर है, ह्यूमन लेबर, उसको ईज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया। ओके, बट ये ईज करते करते क्या हो गया? दे आर गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू। लाइक आपने एक बात सुनी, एक सुनी है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी वर्जन 2 भी आ गया है, ठीक है। ये चैट जीपीटी होता क्या है? जैसे आपने, आपको एक ये कंटेंट लिखना है, तो आपने वो कंटेंट के बारे में आपने बोल दिया, चाहे इतने वर्ड से मुझे कंटेंट चाहिए चैट जीपीटी में, we'll explain, we'll understand that chat gpt also in some time, okay। तो क्या हो गया? आप लिख दिए, तो ऑटोमेटिकली वो क्या किया, चैट जीपीटी ने वो आउटपुट दे दिए। तो क्या हो रहा है इससे? क्या हो रहा है? कंटेंट राइटर्स, जो कंटेंट राइटर्स है अलग अलग कंपनीज के, उसके जॉब चली गई है। ठीक है। 12,000 पीपल हैज लेड ऑफ फ्रॉम गूगल, क्योंकि दे उसकी जरूरत ही नहीं। आर्टिफिशियल जो काम वो 12,000 लोग, पीपल जो 12,000 लोग कर रहे थे, वो एआई कर दे रहे। तो इसमें क्या हो रहा है? कॉस्ट कॉस्ट कटिंग भी हो गए, कंपनी की फायदे भी हो गए, देयर इज अ प्रॉफिट ऑल्सो, और एंड दे आर एंड दैट इज गुड फॉर द कंपनी। लेकिन क्या हो रहा है? दे आर रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स, दैट इज ऑल्सो द थिंग, कीप इन माइंड। तो ये यही नहीं, एक और चीज आया, एंड ये चैट जीपीटी ओपन एआई का एक प्रोजेक्ट है, ओके। एंड देयर इज वन मोर फ्रॉम ओपन एआई, एंड दैट इज डेल ई। ये शायद आप लोग नहीं सुने। आप एक डिस्क्रिप्शन दे दो, जे आई एम विथ माई चाइल्ड ऑन ए मून, आई एम वॉकिंग ऑन द मून विथ माई चाइल्ड, ओके। तो ऑटोमेटिकली एक ड्राइंग कर देगा, मून का एक सरफेस बना देगा, उसके बाद एक क्यूट सा ड्राइंग बना देगा, एंड इतनी अच्छी ड्राइंग बना देगा, उससे क्या होगा? आर्टिस्ट की जो जॉब है वो भी चली गई है और जाने वाली है। ठीक है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। इफ पॉसिबल, आई एम वर्किंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ चैट जीपीटी, आई एम गोइंग विद दैट। ठीक है। इफ पॉसिबल, एंड देर इज 90% पॉसिबिलिटी दैट in the level 2 trading, we will be designing a chat gpt for, okay, we'll be designing a chat gpt. For that I will be working for the for 4-5 months, and we will be coming with a project। आप chat gpt कैसे काम कर रहा है, कैसे डेटा ले रहे, हाउ डेटा इज प्रोवाइड ओवर देयर, वो सारे बातें हम लोग करेंगे, ओके। तो डेली के बारे में समझ में आ गया। वो पेंटिंग वगैरह कर दे रहे। तो इंस्टेड ऑफ ईजिंग ह्यूमन वर्क, क्या कर रहे हैं इससे? इससे हमारा जो लोगों के जो काम है, वो जॉब है, दैट इज ऑल्सो बीइंग सैक्ट, खत्म कर दे रहे, जॉब्स को भी खत्म कर दे रहे। दैट इज द इल इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे बच्चे असाइनमेंट लिख रहे हैं, आप असाइनमेंट का क्वेश्चन लिख दो, वो आंसर दे दे रहे। तो आपकी जो ह्यूमन थिंकिंग है ना, दैट इज ऑल्सो गेटिंग डिटोरेटेड डे बाई डे। तो बी केयरफुल, आप लोग ये सारे मेल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये तो बुरी बात, ये सब नेगेटिव इफेक्ट है ही, और इससे क्या होगा? ह्यूमन थिंकिंग से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज दे आर जस्ट गिविंग द इनपुट एंड गेटिंग द आउटपुट। उसके बाद यदि वो जो आउटपुट है, इफ यू चेक फॉर प्लेजियरिज्म, तो देर इज 0% प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म जो सॉफ्टवेयर है, दैट आल्सो फेल्ड, आई एम टेलिंग यू। प्लेजियरिज्म तो है, बिकॉज दे व्हाट चैट जीपीटी इज कॉपिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, एंड देन दे आर जस्ट राइटिंग इट एंड दे आर गिविंग इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन क्या कर रहे हैं? इट्स अ हायर लेवल ऑफ प्लेजियरिज्म जो ये कर रहे हैं चैट जीपीटी, ओके।
तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दीज आर ऑल द इल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम क्या बोल सकते हैं? इस इट इज इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटेड बाय मशीन्स इन कंप्यूटर साइंस। एन आइडियल इंटेलिजेंट मशीन इज फ्लेक्सिबल रैशनल एजेंट दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट एंड टेक्स एक्शंस दैट मैक्सिमाइजेस इट्स चांस ऑफ सक्सेस एट सम गोल। हाँ, मैक्सिमाइजेस चांस ऑफ गोल, ठीक है। तो सक्सेस मैक्सिमाइज कर देता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीन टाइप के होते हैं। ओके, there are three types of artificial intelligence: artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, artificial super intelligence. अभी जब narrow intelligence की बात कर रहे हैं हम, what we are talking about narrow intelligence. ये what is this narrow intelligence? narrow intelligence पहले थे, ठीक है। उसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक टास्क के लिए दैट इज बीइंग यूज्ड। जैसे जैसे रिकमेंडिंग ए प्रोडक्ट। जैसे आप एक ई कॉमर्स, यू हैव बीन टू ई कॉमर्स साइट लाइक फ्लिपकार्ट, व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, तो इट इज रिकमेंडिंग दैट दोज हु बॉट दिस आर्टिकल दे बॉट दीज थिंग्स आल्सो। रिकमेंडिंग, तो ये हो गया आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ओके, ये पहले की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, पहले की। तो अब आ गया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एट प्रेजेंट। प्रेजेंट जो है दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। व्हाट इज जनरल इंटेलिजेंस? मीन्स क्या होता है? ह्यूमन लेवल का वो सोचने लगे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे दे आर अंडरस्टैंडिंग आवर लैंग्वेज। मैंने मैंने आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग एंड इट इज अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज वर्किंग एंड दे आर गिविंग द आउटपुट, तो दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग, जैसे यू आर अपलोडिंग इमेज इन यूट्यूब, यूट्यूब नहीं, सॉरी, इन फेसबुक। तो फेसबुक में क्या होता है? ऑटोमेटिकली दे अंडरस्टैंड दैट किसके इमेज है, ये किसके इमेज है, दे स्टार्ट्स रिकमेंडिंग यू फॉर टैगिंग विद द फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल फंक्शनिंग एंड रीजनिंग एंड सो ऑन। तो इसमें आर्टिफिशियल जनरल, दिस इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो एट प्रेजेंट वी आर इन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और जो आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये पहले था, पास्ट में था। और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, दिस इज द प्रेजेंट। एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक है, मशीन कॉन्शियसनेस। जो हमारा जो एक टर्मिनेटर मूवी आया था, उसमें जो कॉन्शियसनेस दिखा रहे थे, या ठीक है, बहुत सारे रोबोट्स है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट प्रॉपरली। तो ये जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसके इस पे काम हो रहे हैं, एमआईटी में भी हो रहे हैं, आईआईटी में भी हो रहे हैं, ठीक है। बोस्टन, या बोस्टन यूनिवर्सिटी में भी हो रहे हैं। ओके, तो बहुत जगह पे हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने एक, या वी विल लुक एट सम वीडियोस, हाफ एन आवर के वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड एंड लुक आउट ऑन दोस वीडियोस, दिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कुछ वीडियोस आल्सो वी आर प्रेजेंटिंग ओवर हियर, you should go through those videos and those are very important। Okay, now what are the applications of artificial intelligence? That also you want to know, what is applications, क्या क्या होते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर डोमेन। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है डिजाइन टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट। जैसे आजकल क्या हो रहा है? डॉक्टर्स के पास आप जा रहे हो, यू आर टेलिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स, दे आर राइटिंग इट ऑन एन आईपैड और ओके, डिजिटल डिवाइस। एंड द एक्सपर्ट सिस्टम इज असिस्टिंग, असिस्टिंग द ह्यूमन बीइंग। असिस्टिंग, एक बॉस बैठे हुए हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे टेस्ट, दिस टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड। तो व्हाट द डॉक्टर इज डूइंग, what are the doctors diagnosis purpose में especially use होते हैं, what the doctor is doing, doctor is writing all those things and they are giving in front of you, ये सारे टेस्ट कर लीजिए, ये सारे मेडिसिन आप लीजिए और फिर you please come back to me। तो expert system is not replacing anybody, it is just designed to assist experts। माने एक्सपर्ट जो है, जो डॉक्टर है, उसको असिस्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है, दैट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। ओके, एंड इट इज यूज्ड इन मेडिकल एनालिसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, chemical analysis, geological explorations, etc. Okay, अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में हमने बोल, जो मीन्स वट एवर वी आर स्पीकिंग एंड दे आर टेकिंग इट, they are taking it and they are understanding, that is a natural language processing, enables people and computers to communicate in a natural language। Okay, communication हो रहे rather than in a computer language, so that is a natural language। Okay, now one is speech recognition। ओके, स्पीच रिकॉग्निशन क्या होते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? इट इज कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विथ स्पीच, नॉट विथ रीडिंग एंड राइटिंग।
That is a speech recognition. Okay, the goal of speech recognition is to allow computers to understand human speech so that they can hear our voices and recognize the words we are speaking. Almost same natural language processing हो रही है, ठीक है. It simplifies the process of interactive communication between people and computers. It is the thus it advances the goal of NLP. NLP का advance करता है वो, that is NLP. This is also NLP actually. Okay, तो इसमें क्या होता है, they can hear our voices, they recognize our words, and they can simplify, and it simplifies the communication. Okay, तो उसमें क्या होता है, हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं. जैसे ओला ओला के कैब करना, तो आप बोलो जो ओला कैब ऐप ऑन करो एंड write the tell the destination and okay, and they will automatically take where you are, where is standing, what is your current location. Okay, and they'll ask for the destination, you say, and automatically they will book a Ola cab for you. So these are all the applications of speech recognition, you can say. एक है computer vision, that is also very important. Camera है, the camera can understand that a lot of things. Okay, like आप ले लो कंप्यूटर विजन का एक एप्लीकेशन यदि आप लेना चाहते हैं. कंप्यूटर विजन में बहुत सारे उसमें एप्लीकेशन यूज किया गया, जैसे ड्राइवरलेस कार्स. जस्ट टेस्ला ने जो कार लॉन्च किए, तो वहाँ पे कंप्यूटर विजन यूज हो. कंप्यूटर विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, क्या होता है, दे अंडरस्टैंड, दे कैन सेंस, दे कैन फील. ओके, they can feel that what is in front of the car. Okay, so that is the mission of computer vision. The goal of computer vision is to give computers the powerful facility to understanding their surrounding by looking. Okay, the way we look ना, पहले से sense, hear, feel, taste, उससे पहले हम देखते हैं कोई भी चीज को. The same way the car should, or the automatic car or the robot should see through the camera, and they should understand first, and they should act accordingly. Okay, so that is a computer vision, and this is done through the cameras only. It's not that उसके पास आँख है, ठीक है. There is camera is processing the information. Okay, उसके बाद एक robotics is also, robotics आपको पता है, robots are also working for us. Okay, they are taking, they are lifting heavy loads. Yeah, they are working for us. They are doing operations. और ऑपरेशन किस है, मेडिकल में ऑपरेशन, कैटरेक्ट आई ऑपरेशन कर रहे, सारे रोबोट्स कर रहे. ठीक है, तो ये सारे रोबोट्स, they have been given more and more data, they understand it and they act it. रोबोट्स आजकल आप लोग आपकी जो ये है आर्मी है, आर्मी में भी यूज कर, दे आर गोइंग टू रिप्लेस आर्मी ऑल्सो. ओके, रोबोट्स, बट दैट इज वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू. ओके, लेकिन वो आर्मी में भी यूज करने की चल रहे. वर्किंग इज इट बोस्टन डायनेमिक्स में इसकी काम चल रहे हैं रोबोट्स में. इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, वी ऑल विल लुक ऑन दोज वीडियोस. दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस. फॉर दैट वीडियो विल कम टुमारो. ओके, तो आज कुछ वीडियोस हम देखेंगे. तो ये एक रोबोटिक्स की काम है. उसके बाद है ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग. ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू द प्रोग्राम फॉर यू. ओके, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप इफ यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम, आप चैट जीपीटी में जाके लिखो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एनीथिंग, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, चैट जीपीटी विल राइट, एंड इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू से, उसी लैंग्वेज में द चैट जीपीटी विल राइट इट फॉर यू. तो द ऑटोमेटिक प्रोग्राम, ऑटोमेटिक, तो क्या होगा, प्रोग्रामर्स का भी जॉब जाने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू. तो आप लोग, यू पीपल, मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, व्हाटएवर. ओके, आप लोग को you should not hover over that, means हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी जॉब्स जाने वाले हैं. अब चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इफ यू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ यू कैन डिजाइन एआई, if you understand the data, तो फिर you will get jobs, you will get lucrative jobs, I'm telling you. You have to understand the AI. Okay, so these are all the applications of AI. Hope you all understood. Now I'm coming with with few videos, and we should look at those videos. Or after that, we will come to machine learning and all. Okay, videos देख लेंगे तो फिर हम लोग को क्या होगा, it will be easy for us to understand the training easily. Okay, so let's go with the videos. Hell no. There have been many movies on the rise of robots to try and show people what the world might look like in the future. However, now we're much closer to knowing with the rise of artificial intelligence and, to be more specific, generative AI. So what is generative AI? Put simply, generative AI is artificial intelligence that can generate new content, rather than simply analyzing or acting on existing data. Perhaps in the last few weeks you've heard more and more about OpenAI and their new product
ChatGPT. It's been trending on Twitter and has amassed over 1 million users in just 5 days, which in itself is mind-blowing, having launched on the 30th of November 2022. But what is ChatGPT? What is OpenAI? And how does this revolutionary technology actually work? Here's how it happened. Generative AI has been described in recent months as the most talked about tech in Silicon Valley, and OpenAI is right at the heart of it. You might have seen their other program at work, DALL-E, a text-to-image AI software that creates images based on simple written inputs. DALL-E 2 is a new AI system from OpenAI that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never existed before. OpenAI, the business, was founded in 2015 by Sam Altman and, you guessed it, Elon Musk. Musk stepped down in February 2018 to focus on Tesla, but remains a donor and advisor to the business. Their goal at the time was to advance digital intelligence in the way that is most likely to benefit humanity. At its core, OpenAI is an artificial intelligence research business that has shifted from non-profit to capped profit. Despite no longer working day-to-day at OpenAI, Elon Musk thinks that its latest program, ChatGPT, is scary good. But before we come on to ChatGPT, it's important to note that it's not the first go at an AI chatbot. Microsoft launched DAY in 2016, but within the first 24 hours, Twitter users taught it rude, racist, and misogynistic language, which led to its downfall. Meta have also launched BlenderBot 3 in August, but again it fell down for similar reasons, as well as providing false information, even to questions like who became president in 2020, suggesting Trump had won. OpenAI is trying to avoid these kinks by employing Moderation API, a moderation system that assists developers to show when things go against their content policy, like illegal or unsafe information. It's not 100% accurate, but it certainly helps. Alongside ChatGPT and DALL-E 2 is GPT-3, a natural language system that can also write, argue, and code. And ChatGPT uses an upgraded version of this to create text at incredible speeds. So that brings us on to ChatGPT. What is ChatGPT? That's what you're all here for after all. According to a statement from OpenAI, we've trained a model called ChatGPT, which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests. ChatGPT is the third update to OpenAI's generative pre-training idea, which allows users to communicate with robots with seemingly natural dialogue. But its uses don't stop there. It corrects grammar, it summarizes difficult text into simple concepts, it converts movies into emojis, and it fixes bugs in Python code. ChatGPT was first opened up to beta testing in November 2021 through the Playground, and its launch this year is supposed to be an improvement on GPT-3 as to not provide any harmful outputs. The software itself has been trained by AI and machine learning, with massive amounts of text data from various sources. The training used RLHF, reinforcement learning from human feedback. The Times newspaper in the UK describes ChatGPT as a stunningly lifelike conversational language system and described it as the world's first truly useful chatbot. This all seems a bit too good to be true, and maybe it is. We have to think about not only the limitations of the technology, but also the challenges and threats that it poses to society. The first immediate consequence of ChatGPT was that its own website had frozen due to massive demand, with more than 1 million people signing up to use the software in just 5 days, which is quite incredible, forcing OpenAI to quickly scale their systems. ChatGPT is still in its early stages of development, therefore its knowledge base is limited, and mostly linked to 2021, which renders some questions useless. When Elon Musk found out that OpenAI was accessing Twitter's database to train ChatGPT, he paused the access because OpenAI is no longer a non-profit and open-sourced. Therefore, they should pay for this information in future. As you might expect, there are some ethical implications that come with this type of chatbot, particularly around new videos that have surfaced where coders can use it to write their code and school kids can use it to answer their exam questions.
Look at this. Let's say I have this problem. I just copy from my homework. I'll paste it, and within seconds, it literally shows you how to do it, says how to do the math, and at the end, the answer is, wait, it's coming. The answer is B. B. And then you can go to the exam, you go to B on number 5. Question 5. B. Gone are the days of homework and open book exams. Some troublemakers have also shared how they were able to avoid the content moderation, forcing the bot to disable its ethical guidelines, followed by a tutorial on how to make a Molotov cocktail. Further implications include how people could be the target of generative AI, for example deepfake videos, explicit content, or propaganda, questioning user privacy. This type of generative AI can also push people out of work. DALL-E 2, the text-to-image AI, has now been linked to Shutterstock, which has caused outrage given people are now competing with AI to sell their photos online. However, Shutterstock's CEO, Paul Hennessy, has a slightly different view. I think there are two choices in this world. Be the blacksmiths that are saying cars are going to put us out of the horseshoe making business, or be the technical leaders that bring people, maybe kicking and screaming, into the new world. But this doesn't just apply to photos. Some are saying that ChatGPT's ability to generate human-like written text could see the beginning of the end of journalism, whereas others feel it lacks the nuance and critical or ethical thinking skills that are required. The threats that ChatGPT poses to society might seem shocking, but these threats and challenges will also help OpenAI to fix loopholes and workarounds, which is why they've released this version to the general public. They've already said that some answers are incorrect because there is no source of truth in the data they use to train the model. Sometimes ChatGPT's complex and detailed answers also mislead people into believing that the answers are true. Sometimes though, you have to think of the positives, like people who run online businesses who can now use ChatGPT to help customers with live chat queries that don't take all day and feel much more natural, helping business owners to make a sale. In spite of the limitations and concerns, many in the tech world see ChatGPT as a look into the future. Generative AI is the next era-defining innovation which will change how we interact with the internet. Some think this is the end of Google. Why scroll through ads when you can ask a question and get an accurate answer? ChatGPT's Q&A is free to the public, with many people suggesting that a future iteration could include cost per question. At some point, ChatGPT will likely have to pay for itself. We may see adverts on future models, or there might be microtransactions. No one can predict the future, however. It could mean mass unemployment to anyone in the arts world, or it could just be a useful tool for students to cheat on their homework. Its impressive rise in just a week has made it worthy of discussion, and the fact that it's already being compared to Google and the iPhone makes it sound like some football wonder kid that every manager wants to sign. For now, it's more of a meme machine, and OpenAI seeks to understand what it can and can't do. Whatever comes of this new age technology, we'd like to welcome you to the future.
Yeah. Oh, go. Hello there, Internet. I'm going to be showing you what this DALL-E 2 is actually and how does it work, so you can take full advantage of this great application. So first of all, guys, let's see what actually is DALL-E. If you don't ever notice about DALL-E number 2, DALL-E is a new artificial intelligence system that can create realistic images and art from. You just need to hit into a description into a natural language, and they will be actually doing everything for us. So for example, if you go and type DALL-E 2 create some realistic something like an astronaut riding a horse in a full realistic style, boom, DALL-E 2 is going to be creating something like this. Or this is another alternative version. So there are different options that it can give you. Let's say for example that you don't like that, you can just delete some stuff and look for something else into the description. So I want to, let's say I want to see a bowl of soup as a planet in the universe as a digital art. And there we go. So this is what's going to be showing us. If you don't like that, you can see much more alternatives. So in order to get started here into DALL-E, what we need to do is to go into the sign up section. So as you can see here, the left of the OpenAI is going to be asking for creating an account. So in here, what you want to do is to create your account real quick, and after that we can go into continue. Alright, so here I need to provide a passcode so I can have the sign up extension. I'm just going to close this for a second, and here we just need to verify our email. So I need to verify this real quick. So I need to verify my address and go into a new tab. So what's going to happen now is going to be asking, tell us about yourself. So what you want to do is to input your information, which is actually something really easy. We need to verify a phone number in order to continue, and after you verify your phone number, hit into send code. In my case, there's a phone number already linked into the maximum number of account. So what I'm going to be choosing is another phone. Either you have to be into the waiting list because OpenAI is just being started, or you can just create your account right away. If it's the case for you, we need to wait till we received a message from DALL-E number 2 that we are able now to enter into DALL-E number 2, because we need to be into the waiting list. Now, if you are able to create your account and your account has been easily looked in, it's going to be looking something like this. So we have the history, we have the collections, we have the start with a detailed description, we have the generate option, we have a few credits, and here we have 15 free credits will be refilled on this date. So if you want to generate an images, you need to have some credits. Now you can either buy some credits by yourself, or you can either get 15 free credits each let's say 2 weeks. I'm pretty sure of that, 15 days. So here for example, I've just used my credits using my account. So as you can see, I don't have any options right now, but you need to actually choose your credits. Like you have to be really be valuable with your credits and be too creative, and you don't want to spend everything in just one day, because once again you only have 15 free that's going to be generating for you
2 days, 2 weeks after that. If you want to buy some credits, you can choose this option, and 115 credits is worthy of $15. So if you want to buy let's say $1,800 actually, or $90, you get 690 credits, which is actually, I think it's really great, but you want to stick into the free version. So I'm gonna hit into cancel, and here, for example, I'm gonna tap with different options. I want to try to say to DALL-E, I wanted to create. Now if you want a specific stylish, so let's say for example that I want to create me something related like this, for example. So style of vaporwave. So this is a digital art, yellow wall on midnight. So what you want to be here, what you want to do here into the descriptions, you have to be as detailed as possible so you can get like the full idea of what you want. So what I'm going to be choosing here is to actually delete the draw sketch, and I want to choose a digital art of a monster hiding below a bed. And as you can see, we do have some examples of what we can do here into the DALL-E number 2. This is the bar of the loading section, and once this has been successfully done, we are going to be seeing our own creation, or the creation of DALL-E number 2. Alright, so in here, this project has been already listed, has been created. So let's see what the computer has been created for us. Alright, so there we do have 4 versions of what we asked the application to create. So as you can see, I think like the best option that I can give you, the best variant that I liked is this one. So I'm going to click into this one, and if I wanted the computer to create something like this, but this is like not exactly what I was looking for, I'm going to hit into variations. So what's going to happen is now that the computer is understanding what are we actually looking for. So you want to look, you want to have as detailed as possible your ideas, and you don't want to spend a lot of credit. So that's the reason why after you understand this, you might be thinking that having 15 credits each 30 or each 15 days, it's like really low. So you want just to be really specific, and you don't want to spend everything in just one day or in just one project. Alright, so as you can see, we do have different variations of what we just created. And let's say for example that I kind of like this one, but this one is not looking like if this was below a bed, but I think this one does. So I think I can stick around with this one, and if I'm okay with it, I can just download it. If I want to edit some section, so for example, let's say I'm going to go into edit, and here into edit, I'm gonna delete this woods, this thing, and I'm gonna type again the edit image. I'm gonna hit a monster. So what's gonna happen is gonna be generating me something into this area. So there, as you can see, what happened here is like the computer generating me some ideas of what I can do instead of creating this wood stuff. So this one does not look like this is just like this is not like a bed, but I think this one looks much more interesting for me. And if I wanted to edit, I can just go on and on and on and on. Now, as you can see, I do have a different stuff. For example, here I asked it for a astronaut in a new world. So this one was generated by the computer, and as you can see, I had different versions of what I was just created until I find something that I do liked it. So the best part is that you can download these images totally for free, because these are not generating by yourself. So that's the great part of creating here into DALL-E number 2. So now that you guys know how to create here into DALL-E number 2, now that you have your account, now that you have your free credits, then you are ready to go, ready to create your own ideas and make them true here into DALL-E number 2. Now don't forget to like and subscribe to the channel if you want to see more about this great website platform. Thank you so much for watching this video, guys, and I'll see you on the next one.
How's it going, guys? We just got the latest update of full self-driving beta, and today I'm going to test out, does this car actually have the capability of plugging in an address, clicking a button, and driving you from point A to point B? Finally, we've got full self-driving beta unlocked. We're going to test it here today in Santa Monica. Then we're going to take it to LAX, the most stressful environment possible, to see what this thing is really like. Tap the brake, hit drive. Go ahead and click this button here. That'll activate full self-driving beta. Check it out. We've got this incredible display that recreates the live environment using all of the cameras in the Tesla. You can see all of the cars passing in both directions right here. Now, my car is blue, of course, but I set it to lime green so you can see it a little bit more clearly on the dash. Other than stoplights that take a really long time, I'm going to leave this completely raw footage so you can see the full truth of full self-driving beta, the strengths, the weaknesses. I'm pushing this to the limits. We're going to do roundabouts, we're going in the craziest cities, and then we're going to go to LAX. All right, the light turns green. I didn't even have to tap the accelerator. The Tesla is driving itself fully. Check it out. We've got all the lanes here. Red line showing the boundaries of the driving area. We got to get all the way over to the left to go on the California incline, changing lanes to follow route. So it's automatically changing lanes right now. I didn't have to click anything whatsoever. Upcoming lane change right now. Changing yet again. Now, every once in a while, it will have a little display, an alert that says, put your hands on the steering wheel. It's a legal requirement to basically make sure that you are not going to sleep or going in the back of your Tesla and trying to make it full self-driving. It's a little bit misleading. I agree. The title, autopilot, full self-driving, it should be able to do everything with no human intervention, but that's just marketing jargon. I will say, there's an interior camera right here. That's monitoring your eyes. It's really good at detecting when you're not paying attention. If you pull out your phone especially, I'm not sure if there's programming in the camera itself to detect phones. I imagine there is, but it'll pretty much instantly trip the system to make you put your hands back on the wheel if you are using your phone. But if you pay attention to the road, as of course you should be doing, pretty much if you got your eyes on the road, this car will drive itself from point A to point B with very, very little intervention. All right, the light turned green. Signal just went on. Apply a slight turning force. The other option you can do instead of turning it is you just move the volume control or the cruise control knob. And that, all right, this is kind of scary. Turn. Whoa. All right, that was a pretty difficult corner. There's a reason why I routed it this way in the GPS, and it did it very, very well. Notice there's no right lane marker. There's no white line there. It still knows that, obviously, don't want to smash it into a wall. Now, I've got a little bit of a love-hate relationship with full self-driving, and I'll explain. When I originally got this car, the Model S Plaid, I had two options. You either pay $12,000 to get the full self-driving beta. I believe it might even be 15 grand now. I'll have to double check. Or you can pay a monthly subscription of $199 a month. So to save a bit of money, because I figured I wouldn't use it all the time, I decided to do the monthly subscription. All right, look, it's actually seeing that car. I thought it was going to be awkward, but it totally figured out that situation. And I mean, look how complicated this is. It's showing the pedestrians crossing the street right now. It's showing a bicyclist actually on the screen. Shows him as a motorcycle. Lit him up in blue to show that it's a object in the way. Doesn't recognize dogs, but I mean, that pretty much worked as good as it possibly could have. Now we're going to take a left-hand turn here and continue on with our directions. This is actually pretty darn crazy. I'm really, really impressed. All right, going to make a left-hand turn here. Now, as I was saying, all right, coming up, left-hand turn. There's cars coming, so you got to go quick. It's paying attention to pedestrians as well. And that got us to our first destination. Okay, making a left-hand turn here, checking if the intersection is clear, which it is. And boom, accelerating through the turn with no intervention whatsoever. We're going to go over to a roundabout right now because, let's see, hopefully this routes us through it. Roundabouts are a very interesting situation, even if you're a human being. So as I was saying before,
I've got a love-hate relationship with the Tesla Autopilot. I bought the subscription immediately when I got the car, and I have paid about 11 months of subscription. Noticing that car there. Now I am curious. I think it's going to scrape the car. All right, I'm going to hit the brakes because it doesn't know that my car is lowered, and that is a really, really steep incline. That's another problem which we'll discuss in a little bit. But I paid for full self-driving beta for 11 months, so a better part of $2,000, more than $2,000, and I never actually got to use full self-driving beta until now. The reason being is Elon said that you needed to get a certain safety score. Now, this is an awkward situation here where this guy's kind of parked. The Tesla doesn't really know what to do. Is that a real attempt at parallel parking? Oh, okay. I'm going to intervene here because this guy is doing a parallel parking maneuver that the Tesla just didn't understand. So once you unlock the subscription, that didn't actually mean that you got this level of full self-driving beta. Is this a serious parking job right now? It didn't actually mean you got full self-driving beta. What it actually gave you was the ability to do self-changing lanes, so not actually have to change lanes by yourself. It would steer, it would exit from the highway, you could use the summon feature, but that's about it. You couldn't actually use this functionality until you proved yourself. I just raised the car up so I can get over this absolutely ridiculous incline. Now, is it going to go really fast? Yeah, I'm going to hit the brakes. So it doesn't realize when there's really steep dips, and it was about to ram the front end of the car, even with the suspension raised, probably into that dip. So you do need to pay attention. Now, if you don't hit a certain safety score, which is very ironic, basically Tesla wanted to determine via a bunch of different data points, your turning, your acceleration, your forced autopilot disengagements, etc., whether or not you're a responsible driver. And based on you being a responsible driver or not, it would give you a safety score. And you had to get a perfect safety score, essentially, to unlock full self-driving beta. Now, trust me, as a YouTuber, I wanted to make content on this immediately. So I tried every trick in the book to unlock full self-driving beta. And really, it became a game on the forums. Everyone talking about it basically was trying to provide the easiest way possible to reach that score of 99 out of 100 on full self-driving. And it was really, really difficult. Essentially, you had to go on a 100-mile drive and then park the car for the better part of a week. It's creeping very slowly. It definitely could have accelerated sooner than that. It was almost impossible to get. So I basically wasted $2,000 on full self-driving beta. Finally, they've unlocked it for everyone who has the subscription or paid for it. I do kind of feel like Tesla owes some people a little bit of a refund, because when I initially paid for the subscription, or the people who paid for 12 grand, they didn't expect that. Interesting why it went so wide there. That was very unique. I didn't expect to have to prove myself in a near impossible test to get a feature that I paid money for. I think it's a little bit, I don't know. I'm not a big fan of that. All right, turning. I mean, the car has pretty much acted perfectly so far. The only intervention I've had to do was somebody doing a ridiculous parallel parking move where they're stopping in the middle of the street. I imagine I could have just waited there and eventually the car would have figured it out and continued with the drive. But it's a little bit of an awkward situation. Now, what is it doing here? Why did it come to a complete stop? Okay. That was completely unnecessary. And it is guiding us around the roundabout. Tragically, the end of the destination is right here. But maybe if we type in a new destination, it'll take us around. Oh, it's going for some reason, even though I don't quite know why. All right, going around this roundabout. Now it's going to decide to take a right turn. And then I think we're going to show off what it's like to drive on the freeway as well as LAX, because the freeway is the ideal situation for this car. Now, every Tesla, if you don't buy the full self-driving, has lane keep assist. Now, we've got somebody coming right here, so hopefully the car doesn't run into him. No. If you click this button on all Teslas, it will actually keep itself in the lane, slow itself down, speed itself up. So it is really, really good on highway environments. And I'm very confident with that scenario. This is still scary to me. I'm paying full attention because I don't want the car to crash into a pedestrian or a dog or a bicyclist or something like that. How crazy is this? This is something I actually thought about prior to Tesla doing this full self-driving update.
for the future of autonomous cars. And that is, will there be different levels of driving when it's fully autonomous? Some drivers are more cautious and defensive. Some drivers are more aggressive. Is there a Chris Harris mode that can drift you around? Is there a BMW douche mode where it doesn't have turn signals? Tesla actually did this, and I am so impressed. You can choose between chill, average, and assertive for the autopilot. So what does that mean? In chill mode, it says you will have a larger follow distance and it will perform fewer lane changes. Average will have a medium amount of follow distance and lane changes. And assertive, which we will put it in right now, it'll have the smallest following distance. It'll also make lane changes without asking. It says perform more frequent speed lane changes and will not exit passing lanes. So it'll keep us in the fast lane the whole time, which is really, really cool. About to hop on the freeway right now. All right, the light is green and we are off. This is one of the most complex turns in all of the LA coastal area. Not sure what these people are doing, but it's essentially a U-turn, but we've got this kind of crazy divider in the middle here. So let's see what it does. And hopefully it doesn't curb my wheels right there. Okay, it's turning, it's turning. Oh my gosh, it's actually doing it. That is really impressive. I was not expecting that. It's automatically chosen the fast lane, which is pretty cool because I'm in the assertive driving mode. I wonder what happens if we put it into chill. Is it gonna take us over a couple lanes or not? I guess maybe not. Put it back into assertive mode. On the highway, it is so nice, so relaxing, especially in bumper-to-bumper traffic. You can really, really relax. It's the ultimate commuter car. If you've got traffic, you can pretty much not zone out. Obviously, you need to pay attention, but you don't have to be as stressed about the driving experience the whole time. You really can relax, and it really adds to the luxurious feel of this car. Now, I will say, and my girlfriend Christine commented on it, that the acceleration and the braking isn't quite as smooth as a human being. It doesn't seem like it anticipates slowdowns far enough in advance and applies the brakes smooth enough. It's not going to crash. It works very, very well, but the inputs aren't quite as organic as a human. It's not like it's trying to keep it as smooth as possible to not piss off your grandma in the back seat. It's pretty much just trying to survive out here on the road. But I will say with this latest update, it is doing so much better than when I first test drove the full self-driving beta in a Model 3 in Beverly Hills. It was an absolute show, for lack of a better word. But in this case, it does really, really well. Confirm lane change to change out of passing lane. It's not going to automatically do that because we are in assertive, but you know what? We're going to go ahead and make that lane change because why not? All right, guys, we are at LAX now, which is the most stressful driving environment possible in Southern California. Now, I will say, if you have an environment that you want me to test out the Model S Plaid in that you think would be more challenging and cause more failures, let me know. I have no idea what the car is doing right here, okay? I mean, with buses going everywhere, lane changes all over, people just parking in the middle of nowhere, this is pretty difficult for the Tesla. I absolutely hate coming to the Los Angeles airport. So if it can drive for me, that would honestly be awesome. Now, my least favorite part of autopilot is the fact that you only get 5 strikes. Now, what do I mean by that? If you have what they call a forced autopilot disengagement, which it's already happened to me once. Essentially, it thought I wasn't paying attention. This little camera here was looking at my eyes. It deemed that I wasn't paying attention for too long, and then it gave me a strike. Now, if you get 5 of those, they will take full self-driving beta away from you. I have kind of mixed feelings on this. Part of it feels like you're paying for something. It should be your responsibility to determine whether you're going to use it safely or not. This car has 1,000 horsepower. You could just decide to go 200 miles an hour on a public street and crash into things. You have to determine yourself what is safe, what's not safe, what's illegal, what's not illegal. So it's a little bit frustrating that you pay for something and essentially enough errors on my part, and I didn't mean to whatsoever. I truly think I was looking directly ahead of me when it gave me that 1 strike. For them to be able to pull that from you after you've paid for it feels a little ridiculous. I mean, imagine if you buy a Ferrari and then Ferrari notices you've been speeding and then they just take the car away from you and don't give you a refund. It's a little bit what it feels like. But honestly, I'm very impressed with the overall system. The new update, the latest full self-driving beta, does a fantastic job. It really can drive itself from point A to point B.
It's making an aggressive lane change right now with a car behind me. Tesla, seriously, good job, and I can't wait to see what the future of autopilot has to offer. I hope you guys enjoyed today's video. Like always, please browse the channel and subscribe. I look forward to seeing you next video. Hello students. Now as we have seen the 38-minute long video and we have really loved watching it. Okay. At the same time we must have understood that AI has gone a long way, yeah, and we have zero knowledge about it. That's the fact. You people have zero knowledge because you do not know anything about AI. So and it's whatever you've seen, it looks so fascinating, but in actual behind the scene is not fascinating. It's a very big thing. It's a very big thing. Okay, so but in the training session we'll try to understand the concepts in an easy way. But in actual, nothing is very easy. A lot of branches are involved in it, be it physics, be it mathematics, discrete mathematics, statistics, calculus, and so on. Everything is involved over here. But not to worry, we'll understand each and every topic from time to time. Okay. Now let's come back to the topic ANI, AGI, and ASI. This ANI, artificial narrow intelligence. What is this? This is for a single task. I have already told you this is for a single task. This is for single task. Single task. Single task. Okay, and this one is the past. पहले यूज होते थे, अभी भी यूज होते इन रिकमेंडेशन सिस्टम. जैसे आप लोग को नेटफ्लिक्स में कोई एक कॉमेडी मूवी देख लिए तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप नेटफ्लिक्स को लॉग इन करोगे तो देखोगे दे इट्स रिकमेंडिंग सम मोर कॉमेडी मूवीज. तो रिकमेंडेशन सिस्टम अभी भी यूज हो रहा है, बट दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. अब ये जो प्रेजेंट एक्चुअल में प्रेजेंट ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. इसमें क्या है, लॉट ऑफ, ये है क्या एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. बहुत सारा आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को एक साथ लाके, ठीक है, तो एक मशीन इज वर्किंग, ठीक है. तो लाइक नैरो इंटेलिजेंस में क्या होते हैं, एक ही काम होते हैं, वन मशीन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, अदर मशीन फॉर डिफरेंट पर्टिकुलर टास्क. तो एक आप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में क्या हो रहे हैं, एक ही मशीन में सारे टास्क हो रहे हैं. ओके, तो रेफर्स टू ए कंप्यूटर दैट इज स्मार्ट एज ह्यूमन अक्रॉस द बोर्ड. ठीक है, ह्यूमन्स की तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज एज ह्यूमन्स क्या करते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं. तो इन दैट वे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज दैट थिंग. ओके, बट स्टिल वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दिस AGI सिस्टम. ओके, बिकॉज क्या होगा, कंप्राइज AGI में क्या होना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस शुड कम टुगेदर एंड वर्क एंड कम्युनिकेट लाइक ह्यूमन बीइंग. लेकिन वो अभी भी पॉसिबल नहीं हुए हैं. दैट्स द थिंग. ओके, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में हम क्या करेंगे, इमेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल फंक्शनिंग, रीजनिंग, सब कुछ होना चाहिए. वी आर वर्किंग ऑन इट. मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन इट. जैसे आपने अभी वीडियो में देखे रोबोट्स आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. तो दैट इज AGI, दैट इज नॉट ASI. आई एम टेलिंग यू दैट्स AGI. ओके, अब ASI क्या है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. उसमें क्या होंगे, दे आर गोइंग टू सरपस ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा सोचेंगे. दे आर गोइंग टू एक्ट and they can make better emotional relationships. They can they can take rational decisions. They can make better art. Okay, everything art they are already making. Even DAL.E, you already seen that thing. तो ये हो गया आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. ओके, अब हम लोग चलते हैं, एप्लीकेशंस तो हमने कर लिए थे. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारा ब्रांचेस है. एक क्या है, वन इज डीप लर्निंग, वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यू नो अबाउट इट. वन इज मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग के पार्ट्स है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग. उसके मशीन न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन किस लिए है, कंप्यूटर विजन आपने अभी कार में देखे, जो आपके टेस्ला की कार, इट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन द वे, व्हाट्स ऑन द पाथ. जैसे आप रास्ते में वो कार चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट्स रिकॉग्नाइजिंग द पेडिस्ट्रियन इज क्रॉसिंग. ओके, देयर इज अ रेड लाइट, एवरीथिंग इज, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विजन. ओके,
कंप्यूटर विजन, उसके ये एक्चुअली दैट टेस्ला इज कंप्राइजिंग ऑल द ब्रांचेस, natural language processing, deep learning, computer vision, neural network, supervised, semi-supervised, reinforcement, everything has come into act. Reinforcement learning is very important, very, very important. Actually, reinforcement learning is the most important thing. That, on that principle only the robot is working, actually. कंप्यूटर विजन तो देखने के लिए कैमरा में इट्स टेकिंग द इनपुट एंड इट्स प्रोसेसिंग द डेटा, इज टेकिंग द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, whatever input. A pedestrian is walking, is crossing the road, suppose. तो वो क्या हो रहा है, तो that is processed in the form of a matrix, actually. Okay, matrix. And it is understanding that what is going on over there. Okay. ऐसे आपने देखा जाए एक डॉग क्रॉस कर रहा था, वो दैट द टेस्ला कैनॉट रिकॉग्नाइज अ डॉग. तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टफॉल्स है, पिटफॉल्स है टेस्ला कार में, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी गुड, इट्स वर्किंग प्रॉपरली. यू हैव ऑलरेडी सीन इन द वीडियो. ओके, तो हम क्या, मशीन लर्निंग. अब आपने अभी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, अभी मैंने मशीन लर्निंग की बात करें. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग होता क्या है, एक छोटा बेबी है, सपोज ये हेलीकॉप्टर इज क्रॉसिंग इन द स्काई, ठीक है, एंड ए बर्ड इज फ्लाइंग. तो एक बच्चे को आप यदि पूछोगे जब वो क्या है, the person, the baby will say that a helicopter is going. Okay, he can recognize the helicopter. Okay, but when a person grows with time, okay, तो बहुत सारे बच्चे, सबके नहीं बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या पता है जो वो हाउ इट इज़ फ्लाइंग, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट. जब हाउ वाली चीज आ जाती है तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जब रिकॉग्नाइज वाली बात आती है तो दैट इज ए मशीन लर्निंग. इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से. ओके, अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज इट. यहाँ पे बात कर रहे व्हाट इज इट. तो क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखिए, इट इज ए हेलीकॉप्टर, इट्स सेइंग. ओके, उसके बाद ये तो क्या हो गया, डेटा एक्सपीरियंस, डेटा से क्या हो गया, एक्सपीरियंस से लर्निंग, फिर लर्निंग करते करते फिर डेटा एक्सपीरियंस लर्निंग, ये चल रहे हैं, ठीक है. और प्लस रीजनिंग जब भी आ जाए तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी इजीली. ओके, आई नो हाउ इट अप्लाइज. हाउ जब आ जाए ना, प्लस हाउ, रीजनिंग इज व्हाट, हाउ, तो फिर वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट हो गए. ओके, अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब पार्ट, इट्स अ सबसेट. मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल एंड डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. ओके, अब डीप लर्निंग में होता क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो. डीप लर्निंग में डीप लर्निंग की कुछ बातें मैं करता हूँ. पहले लेट मी गो टू द डीप लर्निंग फर्स्ट. हाँ, दिस वन, पेप परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग चलते थे. स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में क्या होते थे, हम क्या करते हैं, बहुत सारा टेस्ट करते हैं, टेस्ट से हम एनालाइज करते थे द डेटा इज करेक्ट और नॉट, और वी कैन प्रेडिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू टेस्ट. ओके, थ्रू टेस्ट वी कैन एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग. ओके, वी कैन प्रेडिक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पहले चलते थे. ओके, स्टैटिस्टिकल मॉडल की बात क्या आ गया, मशीन लर्निंग में क्या होता है, इट कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट. तो परफॉर्मेंस क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से बेटर हो गया. परफॉर्मेंस क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से, स्टैटिस्टिक्स से मशीन लर्निंग की बेटर हो गया. और उससे ज़्यादा बेटर हो गया किसकी, डीप लर्निंग की. ठीक है, तो आप ये तो देख रहे हो डीप लर्निंग, लेकिन डीप लर्निंग है क्या एक्चुअली. देखो, मशीन लर्निंग तो बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर रहे हैं एंड इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मशीन लर्निंग, व्हाट मशीन लर्निंग कैन डू, इट कैन प्रेडिक्ट वेदर ए स्टूडेंट विल पास और फेल इन अ टेस्ट by learning from the historical data. उसका previous data देख के machine learning can predict that a person can pass or not. Okay, here the system is not encoded with a comprehensive list of all possible rules that can decide whether a student will pass or fail. Instead, a system learns on its own based on the patterns it learns from the historical data. मतलब पीछे जो डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा, उससे मशीन लर्निंग वो तो रिकॉग्नाइज कर लेगा वेरी इजीली एंड वेरी. तो फिर जब इतनी इजीली सब कुछ रिकॉग्नाइज कर रहा है तो फिर डीप लर्निंग की जरूरत क्या है. बहुत सारा जगह है जहाँ पे डीप लर्निंग फेल हो जाते हैं. एग्जाम्पल है क्लासीफाइंग एन इमेज एज ए कैट और अ डॉग. जैसे जो हम लोग इजीली काम करते हैं वो मशीन लर्निंग नहीं कर पाते बहुत जगह. जैसे क्लासीफाइंग ए कैट और डॉग हम लोग तो क्लासीफाई कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते. डिस्टिंग्विशिंग एन ऑडियो क्लिप एज एन ऑफ ए फीमेल और ए मेल और ए फीमेल वॉइस, इस तरह का डिस्टिंग्विशिंग जो मेल है का वॉइस है या फीमेल वॉइस है, वो मशीन लर्निंग नहीं कर सकते. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीप लर्निंग को यूज़ करना पड़ेगा, डीप लर्निंग. ठीक है, तो मशीन लर्निंग जो भी करेगा वो डीप लर्निंग तो कर सकता है, एडिशनल डीप लर्निंग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं. दैट आई टोल्ड यू. तो मशीन लर्निंग क्या होता है, परफॉर्म्स पोरली विथ इमेज एंड अदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स. इमेज क्या है, इमेज इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप. ठीक है, डेटा टाइप बहुत सारा टाइप होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड,
सेमी स्ट्रक्चर्ड, बहुत सारे होते हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन. ओके. तो अनस्ट्रक्चर जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता उसमें मशीन लर्निंग बहुत पुअर परफॉर्मेंस देते हैं. तो क्या होते, तो व्हेन इट इज गिविंग पुअर परफॉर्मेंस क्या होता है, तो व्हाट वी थॉट द ह्यूमन ब्रेन्स जैसे परफॉर्म करते हैं, इट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स, तो हम न्यूरॉन्स की यूज़ करके वी कैन वर्क आउट विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स यूज़ करते कहाँ, डीप लर्निंग में. ओके. डीप लर्निंग कैन वर्क पैरेलली विथ ईच एंड एवरीथिंग. So today we can leverage deep learning for almost all use cases that were earlier solved by using machine learning. Machine learning पहले यूज होता, अब क्या करते हैं लोग, डीप लर्निंग यूज करें, क्योंकि प्रेडिक्शन ज़्यादा बेटर होते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डीप लर्निंग यूज करते हैं. ठीक है. तो नाउ दिस सेशन और इन द 5 days we will be talking about machine learning. Unless you understand machine learning, it's impossible to understand deep learning. That's the thing. Hope I'm clear. अब हम लोग पीछे चलते हैं. आप जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग एक्चुअल में 3 टाइप्स है. मशीन लर्निंग का टाइप्स है. एक होता मशीन लर्निंग का टाइप्स देखते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, एक होता अनसुपरवाइज, एक होता रीइंफोर्समेंट, एक होता सेमी सुपरवाइज. आप सुपरवाइज लर्निंग क्या होते हैं, लेट मी सी. सुपरवाइज लर्निंग देखते हैं, इसमें 2 टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन. लेट मी टेक ए शीट, वन सेक प्लीज. पहले मशीन लर्निंग से वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरवाइज्ड. सुपरवाइज्ड लर्निंग, अब उसके टाइप्स क्या क्या है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन टास्क. ओके. रिग्रेशन में क्या होता है, व्हेन द आउटपुट इज न्यूमेरिक, और यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट इज कैटेगरिकल. विल अंडरस्टैंड इट एवरीथिंग, डू नॉट वरी. ठीक है. जब आउटपुट न्यूमेरिक हो तो फिर क्या करेंगे, हम रिग्रेशन यूज करेंगे. व्हेन द आउटपुट इज कैटेगरिकल, कैटेगरिकल क्या होते हैं, विल अंडरस्टैंड. लेट्स गो एंड सी. जैसे यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस, यहाँ पे क्या है, दिस इज द आउटपुट लेवल. ये जो लास्ट वाले जो कॉलम होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं. दिस वन इज द आउटपुट. ओके. तो लास्ट वाले जो आउटपुट है, दिस वन इज द आउटपुट, और इसकी जो वैल्यूज है, दिस आर ऑल क्या है, ये सारे क्या है, न्यूमेरिक. न्यूमेरिक. जब न्यूमेरिक हो रहा है तो क्या करेंगे, विल यूज रिग्रेशन. होप आई एम क्लियर. ठीक है. जब न्यूमेरिक हो तो क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, न्यूमेरिक हो तो आउटपुट विल बी, विल बी यूजिंग रिग्रेशन. रिग्रेशन का बहुत सारा मॉडल्स होते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. तो रिग्रेशन हम यूज करते हैं, ये दिमाग में रखो आप लोग. ठीक है. आप यहाँ पे देख रहे हो, कैन यू सी हियर, दिस वन इज ऑल्सो द आउटपुट. वन से दिस वन इज ऑल्सो द आउटपुट. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो येस ये है. तो इस तरह का जब डेटा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेगरिकल. ठीक है. तो इस तरह का जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन टास्क. ओके. तो एक क्या होता है, कैटेगरिकल होगा तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन, दैट इज ए क्लासिफिकेशन, वी विल अंडरस्टैंड. और जब आपकी न्यूमेरिकल होंगे तो वी विल बी यूजिंग रिग्रेशन. तो रिग्रेशन टास्क होते हैं. ओके. एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. तो इसकी डेटा क्या होते हैं, इसमें कोई आउटपुट नहीं होते. जैसे एक साथ आप एग्जांपल ले लो, या यू कैन टेक एग्जांपल ए हर्ड ऑफ कैटल. ए हर्ड ऑफ कैटल एग्जांपल ले लो, ए हर्ड ऑफ कैटल. आप कैटल में क्या होता है, देयर इज ए काउ, देयर इज ए गोट, देयर इज ए बफेलो, देयर इज ए शिप, एंड सो मेनी मोर थिंग्स.
देयर इज ए रैम मतलब एक बकरा होता है वो बड़े टाइप की, ठीक है, रैम एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये हर्ड ऑफ कैटल, उसमें वेराइटी है। नाउ इफ नाउ क्या करेगा, हम सपोज वी वांट द शिप आउट फ्रॉम द हर्ड, तो हम क्या करें, शिप को एक तरफ कर दिए, बफेलो को एक तरफ कर दिए, काउ को एक तरफ कर दिए, ओके, गोट को एक अलग कर दिए, ग्रुप में बांट दिए। तो दैट इज नोन, वो क्या है, वो जो चीज़ है दैट इज नोन एज सुपरवाइज। मतलब हम क्या, अनसुपरवाइज्ड। उसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग क्लस्टर्स, क्लस्टर्स ऑफ सिमिलर आइटम्स, अंडरस्टूड। तो उसमें हम क्या करेंगे, अनसुपर, दैट इज अनसुपरवाइज्ड, आई एम टेलिंग यू। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, एक और है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस बार, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्चुअली? जैसे हैव यू सीन दैट ऑटोमेटिक, दैट कार, टेस्ला कार, यू मस्ट हैव सीन दैट रोबोट, दैट हम लोग अभी वीडियो में देखे। तो ये सारे जो अपने विथ टाइम इट इज एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट इज परफॉर्मिंग वेल, एक्यूरेसी इज वेरी हाई, ओके। तो वो उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। विथ टाइम इट इज लर्निंग, विथ टाइम। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक बेबी, इट्स लर्निंग विथ टाइम, ओके। तो उसको यू कैन से इट एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो एक रीइंफोर्समेंट। अब एक सेमी सुपरवाइज्ड भी है, उसमें क्या है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दोनों का मिक्स है, दैट इज सेमी सुपरवाइज्ड। वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो तो लेट्स डिस्कस अबाउट, तो यू अंडरस्टूड एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिए हुए हैं, कैन यू सी दिस? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्पैम नॉट स्पैम। तो ये क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है कैटेगरिकल टाइप के, स्पैम है येस या नो। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके। ये तो आपको समझ में आ गया टेबल्स। हाँ, एग्जाम्पल ऑन सुपरवाइज्ड, मैंने अभी जो बात की, रॉ डेटा, बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ हैं, एल्गोरिदम यूज किए, द फ्रूट्स आर क्लस्टर्ड विथ सिमिलर, ओके, सिमिलरली। जैसे यहाँ पे एप्पल है, तो एप्पल को अलग क्लस्टर बन गया, दिस इज अनदर फ्रूट, इसके अलग क्लस्टर, ये स्ट्रॉबेरी है, इसके अलग क्लस्टर्स बन गए। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके। तो वी विल बी डीलिंग विद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऑल्सो इन द प्रोजेक्ट्स, बिकॉज वी विल बी टेकिंग वन प्रोजेक्ट विद दैट ऑल्सो, ओके। अब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करेंगे। इस बार हम लोग थोड़ा रीइंफोर्समेंट लर्निंग को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए, क्योंकि हमने वीडियो में इतनी कुछ देख लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो चलो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को देखते हैं अच्छे से, ओके। प्लीज़ वेट वन सेक। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है, ठीक है। व्हाट आई सेड दैट इफ ए मशीन इज लर्निंग, if a machine's performance is improving with time, that is a reinforcement learning. Make it clear, okay. If it is improving with time, means improving with time and it is learning from experiences and it is improving with time, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं reinforcement learning। जैसे यहाँ पे रोबोट है, रोबोट का हम एजेंट बोलेंगे, वो क्या करेगा, एक स्टेट में जाएगा, दूसरे स्टेट में जाएगा, ये दिस वन इज द एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद क्या होगा, फिर उसको आउटपुट मिलेगा एनवायरनमेंट से, इट इज लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो हम इसको कैसे, हम लेट मी मेक सम डेफिनेशंस विद दैट, ठीक है। वी यूज मशीन लर्निंग टू कॉन्स्टेंटली improve द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स और प्रोग्राम्स ओवर टाइम, ये तो हमें पता है। द सिंप्लीफाइड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए प्रोसेस दैट improves machine performance with time is using reinforcement learning. That also I have told. Reinforcement learning is an approach through which intelligent programs known as agents, this is an agent, okay, known as agents work in an known or an unknown environment. Yeah, this environment can be known or unknown, वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करेंगे, इट विल अडेप्ट योरसेल्फ एंड लर्न बेस्ड ऑन गिविंग पॉइंट्स, ठीक है। आप पॉइंट्स कैसे, एक होता है रिवार्ड्स भी मिल सकते हैं, एक होता है पनिशमेंट। रिवार्ड्स होगा तो पॉजिटिव होगा एंड पनिशमेंट होगा तो नेगेटिव होगा, इन दैट वे फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे आप एनवायरनमेंट को आप जैसे दोगे, वट एवर यू आर वर्किंग, तो यू आर गेटिंग रिवार्ड्स। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो यू आर गेटिंग रिवार्ड यदि आपको प्रॉफिट हो रहा, तो यू आर, इफ यू आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन तो यू आर गेटिंग प्रॉफिट, इफ यू आर इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या ये ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन, गलत रास्ते में चल रहा, तो यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू, दैट इज अ लॉस। तो इन दैट वे रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज ऑल्सो वर्किंग, okay. Now it is not the same as machine learning, okay, as training the data set। और मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम सिर्फ डेटा सेट को लेते हैं, उसको लेकर हम ट्रेन करते रहते हैं, इट डजेंट हैपन ओवर हियर लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे एनवायरनमेंट दिया जाता है,
ठीक है, विथ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, जैसे हमने अभी वीडियो में भी देखे। क्या हो रहा है, एक टाइगर इज रनिंग, एक टाइगर आपने देखे थे एमआईटी की, एक टाइगर इज रनिंग एंड ऑब्स्टेकल्स बीच में दिया जा रहा था, और वो ऑब्स्टेकल्स को देख के व्हाट इज डूइंग, इट्स जंपिंग। ओके, इट इज जंपिंग बिकॉज अदरवाइज द ऑब्स्टेकल विल हिट इट। तो इस तरीके से, ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज वो लोग को दिए जाते हैं, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम दैट। ओके, as reinforcement learning is based on environment, जब environment के it is based on environment, many parameters come into play. It takes lot of information to learn and act accordingly. It is not easy. Lot of information these days. Lot of information comes into play. That I have already told you. Okay, environments in reinforcement learning are real world scenarios. All are real world. और क्या कहते हैं 2D और 3D साइमुलेटेड वर्ल्ड्स और गेम बेस्ड सिनेरियोज, इस तरह के कुछ सिनेरियो साइमुलेटेड कर देते हैं। एक लैब ले लेते हैं और उस लैब में क्या करते हैं, जो वर्ल्ड में वॉट एवर इट विल फेस, तो दोज टाइप ऑफ थिंग्स आर केप्ट ओवर देयर एंड द रोबोट इज लर्निंग, रोबोट और द कार वॉट एवर इट इज लर्निंग फ्रॉम दोज थिंग्स। ओके, एंड एट लास्ट क्या करते हैं, उसको रियल वर्ल्ड में छोड़ दिए जाते हैं, सो दैट और देखा जाता है जरा हाउ इट इज बिहेविंग। ओके, we do not believe at the first time only, at the first instant we won't believe the robots. पहले देखूंगा how it is behaving. Okay, then we will improve all those activities, or we will train again, and then we will leave it into the real world. जैसे कार में you are seeing that the car was driving by itself because it is driverless car. लेकिन at some points it is not getting the car is not understanding. तो क्या होता है, human interference is also required. इसलिए क्या होता है, wherever the robots are there, human interference is always there. I'm telling you. Okay. So you can say that human is the expert, and it's the robot is actually assisting the human beings. Okay, that's the way. अब you can think it of as a maze also. Can you see this maze? ठीक है, reinforcement learning is applied, can be applied in mazes. मेज क्या होता है, एक जगह से जाएंगे और दूसरी जगह से निकलेंगे, तो क्या होता है, इफ इट इज फॉलिंग इनटू अ ट्रैप तो क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा, एंड इफ इट इज गोइंग प्रॉपरली तो इट विल गेट रिवार्ड्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो मेज़ है, मेज़ में हम क्या करते हैं, माने एनवायरनमेंट को एक मेज़ की तरह सेटअप किया जाता है, और उसके बाद इट इज़ ट्रेंड। ओके, so we can say that a maze is a good example that can be studied using reinforcement learning in order to determine the exact right moves to complete the maze. Okay, so our reinforcement learning starts with an intelligent program known as agents, and when they interact with the environment, there are rewards and punishments associated. हमारे साथ भी यही है, जहाँ हमें रिवार्ड्स भी मिलते हैं, कभी पनिशमेंट्स भी मिलते हैं, एंड एनवायरनमेंट कैन बी इधर नोन और अननोन टू द एजेंट। हमारे लिए भी यही है, हम अभी दिल्ली में, हम मुंबई चले गए, तो द एनवायरनमेंट, वी डू नॉट नो द एनवायरनमेंट, वी डू नॉट नो द लोकेशन, वी डू नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्या होगा, हाउ आई एम बिहेविंग अकॉर्डिंग टू माई बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू माई एक्शन, आई एम गेटिंग रिवार्डेड और आई एम गेटिंग पनिशमेंट. इट हैपेंस लाइक दैट. They just take actions to move to the next state in order to maximize rewards. What is our aim? To maximize the rewards. It's like that only. Okay. So maze is an important. Maze is through maze you can train a you can train a robot or a car. Okay. अब दिस इज ए reinforcement लर्निंग फ्लो. क्या है यहाँ पे? मशीन लर्निंग. यहाँ पे reinforcement लर्निंग बॉक्स है. उसके बाद यहाँ पे एजेंट है. एजेंट क्या करे? एजेंट इज गेटिंग रिवार्ड्स, एजेंट इज गेटिंग पनिशमेंट. यहाँ पे एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट के नोन एंड अननोन एंड एक्शंस आर परफॉर्म टू मैक्सिमाइज रिवार्ड्स. ठीक है, ये एक लर्निंग फ्लो है. ठीक है, जैसे मैंने मेज की बात किया तो क्या है, इन मेज क्या हो, द सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट इज टू कीप मूविंग. क्योंकि एक जगह से एंट्री करेगा और दूसरी जगह से फ्रॉम द अदर वे इट हैज टू गो आउट. मेज तो वही होते हैं. ठीक है, द गोल इज टू क्लियर द मेज एंड रीच द एंड एज क्विकली एज पॉसिबल. ये नहीं कि वो टाइम लगा रहे, एज क्विकली एज पॉसिबल इट रीचेज. ओके, द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ reinforcement लर्निंग एंड द वर्किंग सिनेरियोज आर डिस्कस्ड लेटर ऑन. ओके, तो फर्स्ट क्या हो रहा, द एजेंट इज द इंटेलिजेंट प्रोग्राम. एजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज द इंटेलिजेंट प्रोग्राम. द एनवायरमेंट इज द मेज. द स्टेट इज द प्लेस in the maze where the agent is. Okay, the action is the move we take to move to the next state. Next state जाने के लिए जो that is known as the action. The reward is the point associated with reaching a particular state. It can be positive, negative or zero. Okay, तो हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं? The concept of maze is given to the agent. Okay, there is a task associated with the agent and the reinforcement learning is applied to it. ठीक है, एक टास्क होते हैं. The agent receives
reinforcement for every move it makes from one state to another. Okay, there is a reward, they always involved with it, I'm telling you. Now we can see this is the reinforcement learning actually. reinforcement learning में can you see machine learning, optimal control, operation research, OR, आप लोग बहुत सारे लोगों ने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा भी होगा, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में भी आप लोग के थे, तो उस टॉपिक का नाम क्या था, जो ग्राफ्स वगैरह थे, व्हाट इज द टॉपिक, कोई एक टॉपिक था 12th में आपकी, ठीक है, एक बाउंडेड रैशनलिटी, क्लासिफिकल और ऑपरेटिंग, कंडीशनिंग, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ. रिइंफोर्समेंट लर्निंग इज सच ए ह्यूज थिंग. ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या हो रहा है आजकल, जो रोबोट्स है, रोबोट्स आई के ऑपरेशन भी कर रहे हैं, कैटरैक्ट निकाल रहे हैं थ्रू रोबोट्स, दे कैन डू. डॉक्टर्स, बट डॉक्टर्स आर देयर, आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर्स आर देयर. यदि रोबोट कुछ भी मिस्टेक करना चाहे तो मिस्टेक करे तो डॉक्टर्स आर देयर टू सॉर्ट इट आउट, आई एम टेलिंग यू. यू कैन नॉट बिलीव द रोबोट्स प्रॉपरली. ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स रिवील ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग. क्या, इट शोज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग. इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या होता है, ये सारे डिसीजन मेकिंग के लिए तो होते हैं. साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, everything is for decision making only. Reinforcement learning is the fundamental science of optimal decision making. If we focus on computer science part of the Venn diagram, तो क्या देख सकते हैं, we want to learn, it falls under the category of machine learning. जब हम सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो इट इज इन मशीन लर्निंग, इसमें मैप टू रिइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है. व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम डेटा, तो वो क्या हो गया, मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग भी इज इन्वॉल्व विथ रिइंफोर्समेंट लर्निंग. तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है. तो होप आप लोग को रिइंफोर्समेंट लर्निंग थोड़ा बहुत समझ में आ गया. अब आवर मेन फोकस ऑफ शोइंग द वीडियो इज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. तो वीडियो देखने में जितने इट वाज लुकिंग सो मच इंटरेस्टिंग, लेकिन ये लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व विद इट. लॉट ऑफ थिंग्स मतलब क्या, लॉट ऑफ थिंग्स दे लाइक कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस, okay, branches like computer science, neuroscience, psychology, economics, everything is involved with it. So it's not that easy. और इसका मतलब ये नहीं कि means how you will do, because there are different people for different branches. Okay, yeah, you should be involved with only one thing. Machine learning, चलो machine learning करो. Reinforcement learning who is doing, तो they are going to do reinforcement learning. उसके लिए आपको OR आना चाहिए, OR properly आना चाहिए, because OR is involved with it properly. Okay. अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज इन्फोसिस. आप सुपरवाइज लर्निंग में क्या है, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में क्या होता है, फ्रॉड डिटेक्शन. फ्रॉड डिटेक्शन जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन या बहुत सारे फ्रॉड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे. ईमेल स्पैम डिटेक्शन, डायग्नोस्टिक्स, इमेज क्लासिफिकेशन, इसमें क्या हो गया, ये सुपरवाइज लर्निंग हो गया. अब रिग्रेशन में क्या होगा, रिस्क असेसमेंट, स्कोर प्रेडिक्शन, या स्कोर प्रेडिक्शन जो कितने स्कोर कर सकते हैं. जैसे आप लोग का मैच देखते हो 2020 या एक वनडे मैच होते हैं, तो क्या होता है, जैसे परफॉर्मेंस होते हैं ना, 10 ओवर में जितने परफॉर्मेंस है उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं 50 ओवर्स में कितने वो ये कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं. तो वो सारे करने के लिए रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं. ठीक है, रिग्रेशन में क्या होते हैं, आउटपुट इज न्यूमेरिकल, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन के आउटपुट इज कैटेगरिकल. अब आगे अनसुपरवाइज, इसमें क्या होता है, डायमेंशनल रिडक्शन. डायमेंशनल रिडक्शन मतलब क्या होते हैं, जब बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स क्या होते हैं, अननेसेसरी होते हैं. तो वो सारे कॉलम्स को हमको हटाना है, वी हैव टू रिडंडेंट ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, वी हैव टू डिस्कार्ड दोज कॉलम्स. तो दैट इज ए डायमेंशनल रिडक्शन. तो उसमें क्या होता है, टेक्स्ट माइंडिंग, फेस रिकग्निशन, विजुअल डेटा, बिग डेटा विजुअलाइजेशन, इमेज रिकग्निशन, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं. ठीक है, अब क्लस्टरिंग में क्या होता है, बायोलॉजी, सिटी प्लानिंग, टारगेटेड मार्केटिंग, या कस्टमर सेगमेंटेशन, ऑल दिस आर क्लस्टरिंग. या आप जैसे फ्रूट्स का मैंने दिखाया, या मैंने हर्ड ऑफ कैटल बोल दिए, तो उसमें जो क्लस्टरिंग होता है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग. अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, गेमिंग होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रोबोट नेविगेशन, ऑल दिस आर रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ओके, तो ये सारे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है. तो वी विल बी गेटिंग इन्वॉल्व विथ दिस एंड दिस, नॉट द रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. आप लोग, इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, तो इसके हम लोग अलग एक ट्रेनिंग करेंगे इन फ्यूचर, if you wish. ठीक है, और इन फ्यूचर वी विल बी डूइंग. ओके, अब कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है जो हमें जानना जरूरी है. एक है लीनियर रिग्रेशन, एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के मीन्स क्लस्टरिंग, नेब बेस.
ठीक है, ये सारे एल्गोरिदम्स है, इसको हम डिटेल में करेंगे आगे. विल बी डूइंग ऑल दिस एल्गोरिदम्स इन डिटेल, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स. ठीक है, तो दैट्स ऑल. ठीक है, इतने ही आप लोग थोड़ा सा देखोगे. एंड आई विल बी शेयरिंग वन ई बुक ऑल्सो. उस ई बुक से थोड़ा पढ़ाई कीजिए. कल से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टुमारो विल बी डूइंग दैट पार्ट, दैट पैंडास लाइब्रेरीज करेंगे. पाइथन, जो पाइथन के लाइब्रेरीज पैंडास, नमपाई, ये सारे हम स्टार्ट करेंगे. अलॉन्ग विद दैट हम क्या करेंगे, ये मशीन लर्निंग के बारे में भी बीच में डिस्कशन करेंगे. एंड एक दो वीडियोज़ भी हम शो करेंगे टू शो हाउ इट इज़ वर्किंग ऑल दोज थिंग्स. ओके, और कुछ मैथमेटिक्स भी कल करेंगे. तो डू नॉट गेट स्केयर्ड विद ऑल दोज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा देख के रखो. ठीक है, नथिंग टू वरी. और कुछ भी डाउट्स है आज की सेशन से, तो आप लोग क्या करोगे, बिकॉज डाउट सेशन विल बी ऑफ 30 मिनट्स, और आप लोग के डाउट्स बहुत सारे हो सकते हैं. तो 30 मिनट्स में इट्स नॉट ईजी टू कवर ऑल द डाउट्स. तो क्या होंगे डाउट सेशन में, क्या करते बच्चे, भाई एक बच्चे पूछे, व्हेन आई एम रिप्लाइंग इन बिटवीन एक और बच्चे ने पूछ लिया, तो देयर विल बी नो डाउट विल बी क्लियर. तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू, हमारा एक मशीन लर्निंग की एक ईमेल आईडी है. वट एवर डाउट्स यू आर हैविंग, वट एवर डाउट्स यू आर फीलिंग, प्लीज राइट इट, प्लीज मेल इट ओवर देयर. और आप लोग एक मेक इट अ हैबिट. यू पीपल डू नॉट हैव ए हैबिट, इग्नो स्टूडेंट स्पेशली. ओके, एक हैबिट, एक बुरी हैबिट है, यू पीपल डू नॉट सी मेल्स, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आप लोग मेल चेक करना एवरीडे शुरू कर दो. दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर, बिकॉज आप लोग का आरसी से भी बहुत सारे मेल आ सकते हैं. और जैसे मैं अभी आप लोग अपना डाउट सेशन मेल करोगे मुझे, तो वी विल बी टेकिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एंड वी विल बी सॉल्विंग द डाउट्स. तो क्या होगा, 30 मिनट्स में हम इजीली डाउट्स को सॉल्व करेंगे. एंड दोज हु आर नॉट सेंडिंग, तो हम क्या करेंगे, जो दोज विल बी सेंडिंग द डाउट्स, वो डाउट्स पहले सॉल्व होंगे. एंड इफ 30 मिनट्स गॉट पास, 30 मिनट्स के बाद वी विल एंड दैट सेशन. आई एम टेलिंग यू, बिकॉज 6:30 to 7 होंगे, 8 o'clock विल बी द अगेन द ट्रेडिंग सेशन. ओके, तो कीप इन माइंड द डाउट सेशन के लिए आप लोग को मेल करना है. एंड टुमारो till 5 you have time. So please send the doubts till 5 p.m. because we will be solving all those doubts at 6:30 to 7, and after 7 we'll end the doubt session, and 8 o'clock will be the training session. Keep in mind. ओके, होप आई एम क्लियर. और कल हम लोग थोड़ा मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा डिटेल में करेंगे. एंड इन एन ईजी वे. हम लोग ज़्यादा फर्स्ट डे में ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहे. ज़्यादा जाएंगे तो फिर यू पीपल विल गेट स्केयर्ड. तो हम क्या करेंगे, आस्ते आस्ते जाएंगे, लेकिन कल हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे. ओके, दैट्स